Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अब हर प्लेट एक कहानी तो है, एक कहानी ऑफ कल्चर, मेमोरीज, लाइफ, जर्नीज. प्लेट में वही तो दिखता है. Talk about any dish of food, there's always so much emotion, stories, nostalgia attached to it. So I think that every plate tells a story. साथ बैठ के खाना, साथ बैठने का बहाना ही तो है. Wow. खाना बनाना, कहानियां बनाना ही तो है. MasterChef is not like that. The winner takes it all. MasterChef is all about learning here. That defines us. Neither our successes nor our failures define us. Absolutely. What really defines us is the moment that we are in right now and who we are in that moment. यूजुअली ऑडियंसेस अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को अपने दिल में रखते हैं. मेरे साथ इस वक्त जो खास शख्स जुड़े हुए इन्हें हम हमारे पेट में रखते हैं क्योंकि पेट में जगह ज्यादा होती है ना, और इनके रेसिपीज हमारे पेट से दिल तक का रास्ता अपने आप बना लेते हैं. सो गाइज, विदाउट अ फर्दर अडू, वेलकमिंग विकास खन्ना, पूजा ढिंगरा एंड रणवीर ब्रार in conversation with me on India Forums. Hello guys, welcome to India Forums. How are you guys doing? Thank you for the introduction. Thank you so much love. विकास अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि रास्ता कैसे बना. मैम पेट में कैसे पहुंच गया. वेल, हमने सुना है इस सीजन मास्टर शेफ की टैगलाइन है हर एक प्लेट एक कहानी. Absolutely. How would you like to describe it for our audiences? What new is this season going to cook? विकास, अब हर प्लेट एक कहानी तो है, एक कहानी ऑफ कल्चर, मेमोरीज, लाइफ, जर्नीज. प्लेट में वही तो दिखता है. खाना तो एक जरिया बन जाता है कहानी बताने का. एंड आई फील कि इस बार हमने वी हैव फिगर्ड आउट कि हम कोई कहाँ से भी आता है, फ्रॉम द humblest to the richest backdrops, food is one thing which unites everyone. True. And I think MasterChef is that platform. True. Pooja, what is your take on that? My take is ki, if I talk about any kind of favorite memory of mine and I talk about any dish of food, there's always so much emotion, stories, nostalgia attached to it. So I think that every plate tells a story, and we're very excited to bring forward many amazing stories this season. नहीं वो है एक लाइन है इस शो में मेरी हुई है कि साथ बैठ के खाना, साथ बैठने का बहाना ही तो है. Wow. खाना बनाना, कहानियां बनाना ही तो है. Wow. तो वही है. I think food and stories are just so Perfectly meant for each other. Beautiful, intertwined. guys. Beautiful. Pooja, you are new to the judge panel, so my Yes. next question is to you. आपसे भी पूछूंगी, मैं पहले पूजा से पूछना चाहती हूँ, what are those qualities जो आप एक contestant के dish में देखना पसंद करते हो? I think for me, food has always been about happiness and love. ये season, what I'm looking forward is, in addition to हमारे जो MasterChef के pillars है, जो है taste, innovation, presentation, to see a lot of love in all the dishes. विकास sir? Anyone who is very curious to keep learning. क्योंकि इस शो में जब आते हैं, मास्टर में सेलेक्ट होते हैं, बहुत उनकी बूट कैंप की तरह ट्रेनिंग होती है खाना सीखने की. आपस में से खाना सीखते हैं. हमारे से we have an amazing panel of guest judges who are coming and they're giving them challenges. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से कौन वो बात ऑब्जर्व करता है, कौन किसमें जिज्ञासा है जी. to learn more. And that is always been the defining force of a winner. Correct. रणवीर? I think we always look for सबसे पहले passion, right? Because हम सबको सब कुछ कभी नहीं आता, लेकिन passion से वो जो quest to learn more वो जारी रहती है. Absolutely. Right? हम लोग अपनी ज़िंदगी में जहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, हमको पता है उसका main ingredient passion है. तो passion हम पहली चीज़ ढूंढते हैं. Beyond that, for me what is really important is वो stretchability बोलते हैं ना एक cook की, कि जहाँ वो है लेकिन वो कितना एक्सटेंड हो सकता है, कितना अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को स्ट्रेच कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, बिकॉज़ नोबडी इज परफेक्ट एंड वी नो दैट. वेल, जैसे कि आपने पैशन की बात की, हमें पता चला है इस सीजन सबसे ज्यादा यंग कंटेस्टेंट एक 18 साल नामक केनी. यूजुअली Kenny. हाँ, Kenny. यूजुअली जब होता है ना स्कूल में बच्चों को पूछा जाता है बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो सब कहते हैं लॉयर, पायलट, टीचर. बट शेफ काफी कम बच्चे कहते हैं, या शायद ना के बराबर. बट हो क्या रहा है अभी, शेफ्स लाइक यू हैव सेट अ बेंचमार्क, स्टूडेंट्स आर लर्निंग, पेरेंट्स आर सीइंग, और बच्चों को एक तरीके से मोटिवेट भी करते हैं. हाउ डू यू सी दिस चेंज?
I think for me, I see it very closely क्योंकि जब मैंने decide किया था, I think 16-17 years ago कि मुझे chef बनना है, culinary school जाना है, there were not too many girls, even girls in my class, and today when I see 15 साल later, becoming a chef is also a viable career option और इतने सारी लड़कियां अभी professionally kitchen में जा रही है, so there's a big change. She became the first mediums to bring the change. जी. How do you see this as a change, sir? What Pooja's done is phenomenal. I was in Gujarat day for yesterday, and कोई signing चल रही है कुछ चीज़ की और हर लड़का लड़की youngsters they all want to become Pooja Dhingra. वो बहुत moving है हम लोगों के लिए because she became the voice of entrepreneurship, of bringing international cuisine to India, of following your passion to your this recognition what she's got globally. So मेरे लिए वो बहुत emotional है because I just do Indian cooking, right? My parameters are Indian food. I'm restricted to that, and I love it. But her open-mindedness got her to master a foreign cuisine, and the kids are feeling that this is so brave what she's done. Ranveer? I think जब केनी की बात करें अगर मुझे सबसे अच्छी चीज़ केनी में ये लगती है कि उसकी जर्नी जो है आज शुरू नहीं हुई, राइट? द मोमेंट ही न्यू, जब उसको पता चला कि ये मेरी कॉलिंग है, तब से वो अपने मन में ऑलरेडी कुक बन गया था, राइट? एंड दैट फॉर मी इज ब्यूटिफुल अबाउट हिम, द फैक्ट दैट आज की जनरेशन एजुकेशन बाउंड नहीं है कि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा अब तक मैं शेफ नहीं, ग्रेजुएशन, राइट? आज की जनरेशन इंस्पिरेशन बाउंड है, वो रोल मॉडल्स ढूंढते हैं और उनको फॉलो करके अपना दे रियलाइज देमसेल्व्स थ्रू रोल मॉडल्स, सो शेफ विकास हो या शेफ पूजा हो, वो रोल मॉडल्स हैं किसी और के रास्ते को नेविगेट करने के लिए, एंड द पैशन दैट सॉर्ट ऑफ ड्राइव्स दिस जनरेशन इज वेरी डिफरेंट. Absolutely. True that. So you're adding something? Oh, it's beautiful. Kenny is really a very powerful contestant. Very powerful. क्योंकि ना जब आप उस एज में आपका माइंड बहुत ओपन होता है. जी. Well, coming to my next question, guys, खाने में कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी स्पाइसीनेस ज़्यादा हो जाता है. उसी तरह हमारी लाइफ में भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. What is your personal mantra for dealing with those ups and downs? For me, it's a saying, this too shall pass. I feel life में everything is transient, every moment, highest highs, lowest lows. So I always try to stay and not get too bothered by something that's too good or too bad because it will go away. So I try to stay centered like that. I just feel that all my journey happened in the US, so you've been used to the top of the line in the world and bottom. तो एक बहुत ही different zone रहता है कि आपका कि for you to rise again when you fallen, you feel that you represent a culture and you can't be defeated. मेरे लिए वो बहुत motivation रहता है. And also I left my mom when I was young, so I always keep doing things which the voice reaches to her that she should be proud. I just do it for that sake. How sweet. Ranveer, what is your mantra? देखिए मेरा मंत्रा ये है कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली. आई थिंक वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. कई बार हम अगर थोड़ा बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि दैट डिफाइंस अस. नीदर आवर सक्सेसेस नॉर आवर फेलियर्स डिफाइन अस. व्हाट रियली डिफाइंस अस इज द मोमेंट दैट वी आर इन राइट नाउ एंड हु वी आर इन दैट मोमेंट. Beautiful. तो मैं उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ. आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली एट ऑल. एटलीस्ट आई बिलीव आई डोंट. They don't. We don't. Have you seen our reels? Well, if I'm not wrong, इस सीजन एक और कंटेस्टेंट है जिनका नाम है रुखसार, जो हेल करती है कश्मीर से. जी. जो कश्मीर के डेलिकेसीज यहाँ लाएगी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो रिच फूड रेसिपीज होती है वो यहाँ लेके आएगी. आई वांट टू आस्क यू गाइज, आपकी फेवरेट कश्मीरी डेलिकेसी कौन सी है? Oh my God. मेरे लिए आई थिंक तबक मास. Which is what? Which is Oh my, the use of milk, the way they. So baby ribs जो हैं उनको दूध में धीरे धीरे पका के और बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ करके फिर उसके बाद उनको वापस क्रिस्प किया जाता है, घी में सेका जाता है अच्छे से. तो बाहर से क्रिस्प और अंदर से एकदम मेल्ट इन योर माउथ जो टेक्सचर क्रिएट होता है,
या एक वो क्रीमीनेस जो Oh. जो गोश्त में आती है, आई थिंक इट्स He is आउटस्टैंडिंग. just getting the taste. No, of it. because it's technically like, why would you do that? अब वेस्टर्न क्यूजीन में हम पहले सीयर करते हैं हर चीज को, and what they figured out is so genius that they cook it in milk, Yeah. like baby ribs go and Never got a chance to taste it, but now the way he's it's described, you don't have to chew it. It's a whole different level of, और कोई तड़के वड़के नहीं है, बस वैसे ही. But I think something for me which is very amazing is a good rishta. I just feel that the sauce, getting that, and that sauce, the color, people think कि कुछ भी मिर्च डाल दो. It's not like that. Mostly restaurant में serve करते हैं. It's a very bad derivative of that inspiration. But for me, the concept of beating the meat and everything is something else. And I also think that Pooja ka bhi favorite wo kava is like for her what we did. She was like she can and like her brain is like, oh my, I can do so many things with kava. It's like something so simple. And, I think Ruxar ke saath especially, it's been amazing to see so many inspirations from different ingredients from Kashmir, Regions of Kashmir. and how she's using them. It's been beautiful. Wonderful. हर रोज एक सरप्राइज होता है हमारे लिए. I mean, एक मिनट, गुच्ची, मीठी गुच्ची stuffed with छेना. I am like, who? सच्ची कह रहा हूँ. I think that dish blew us apart. Absolutely. Gucci, matlab, we wouldn't even think, And she said this is a lost recipe, traditional recipe, served in big festivals and weddings, and meathi gucci or stuffed with chena and nuts. I'm like, possibly one of the best food delicacies I've tasted. जल्दी कश्मीर जाना पड़ेगा. बिल्कुल. वो खुद ही encyclopedia, वो तो खुद PhD है actually. She's a PhD. Ruxar is a PhD in food food technology. Oh, wow. Yeah. Well, lastly, what do you think a contestant should take back from the show, irrespective of he or she wins the title or not? Good question. MasterChef is not like that, the winner takes it all. MasterChef is all about learning here. This is like a whole education which they get in 2 years or 3 years or diplomas or degrees. They get it in 3 months or 4 months. So this is like all about learning and going out with a name tag and MasterChef on the backdrop and utilizing it. You agree to it, Ranveer? नहीं, बिल्कुल सही. एक आप समझ लीजिए कि एक culinary स्कूल है जिसमें आपकी culinary लर्निंग को फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा एडवांस भी कर दिया गया है. क्या बात. और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा. बिल्कुल, I agree to that.